For us, defenders, activists, social workers, whatever you call, articulation of stress is very difficult. Well, I used to think that stress is something which happens to people who have gone through a lot of traumas in their life. एवरी नाइट फुल नाइट हम काम किए ये लॉकडाउन में। सवाल है, एक तो हो गया कि आप सेक्स वर्कर है बट आप एक्टिविस्ट भी है ना, तो आप सेक्स वर्कर के साथ एक्टिविज्म भी करते हैं, आपके पास कलेक्टिव भी है एक, तो सेक्स वर्कर एक्टिविस्ट होने के नाते वो तो उसमें क्या स्ट्रेस है? This kind of stress affected our the family responses and our mental pressure on all these things. इतका त्रास होता की भरपूर भरपूर त्रास होता आमच्यावर. In the kind of work that you do, which is with women with mental health problems, psychosocial disabilities, living inside institutions, how do you understand these women's stories, the kind of stress, distress that they bring to the Anjali program and with which they're living in the institution? How do we understand this suffering in the sort of first place? The environment itself is so stressful. So it's not just the stories of the women or men that we were working with. It was sheer the extreme, appalling poverty of that environment which stressed me up. There was no kind of, proper loo. There was no water. Everywhere there is dirt and filth. And every day in the morning, I would walk in and, bring the women. So I think when we are talking about stress, we also, have to think largely about the location where we are coming from and the community and the society and what it does to you as a person. तनाव हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से हमें प्रभावित करता है, हम इसे ही अपने नज़र से तनाव समझते हैं. Stress is something that gives me a headache, something that makes me think a lot, something that makes me sad, something that makes me question a lot of things. Stress is the various kind of stress, like the mental stress, financial stress, stress related to health, stress related to workplace. So this kind of the mixed stresses people are facing on day-to-day basis. So stress is an emotion which is produced by pressure around you, some kind of pain. It can be both mental and physical, and there can be many other things which you don't want to take, which you don't like. So it can come from anything or it can come anytime, but when it comes when you are stressed, so it generally it affects your whole well-being, like physical well-being also and mental well-being also, and it also affects your work and your productivity. So burnout is basically something that happens when you do same things repeatedly, like if you go to the same place again and again, or you're working on the same thing again and again. So that brings about the feeling of being burned out. When I say burnout, it's one stage ahead of stress, when we are not able to function properly because we've exhausted ourselves so much trying to achieve a particular goal or a task or koi zid, that it creates a state of burnout in your within yourself. बर्नआउट है जब अत्यधिक तनाव जो कहीं ना कहीं किसी तरह से हमारे शरीर पर प्रभाव डालने लगता है और वो दिखाई देने लगता है, तो हम उसको बर्नआउट कहते हैं. जैसे कि इसमें बर्नआउट होने पर ये भी होता है कि हम
उदासीन हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं। हमें हमेशा लगता है कि हम असफल रहेंगे, हम इस काम को पूरा कर पाएंगे कि नहीं। वो एक तरह से निगेटिव ऊर्जा हमारे अंदर ज़्यादा घूमने लगता है और वो ज़्यादा प्रभावित होने लगता है, और उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर और मानसिक स्थिति पर दिखाई देने लगता है। इसको हम बर्नआउट के रूप में समझते हैं। Burnout is exhaustion of both physical and mental energy and your strength. So it is an explosion of deep lying stress which has been accumulated, for a prolonged period of time. Now, in 2019, we are talking about compassion, we are talking about self-care, we are talking about burnout. But way back in 98, 99, although we heard about burnout, I mean, no organizations would do that reasonable accommodation to address your burnout, KP. जान डाल देते हैं वो काम में, क्योंकि वही सेवा मूलक काम पे. I get to hear this so often because our didis who are Janmanas, Karmis, the front line, they all start from this space कि मैं अंजलि में आई हूँ क्योंकि मेरे को सेवा करना है. And I have to demolish that from day one, that you are not here for altruistic purpose. You are here because you've been given a role to change your neighborhood. हम बहुत फ्रीली होम विजिट्स के लिए जाते थे, पुलिस स्टेशन चले गए, किसी भी मीटिंग में चले गए, पर ये सारा कर्टेल हो गया. हमें एक बाउंड्री में रहना पड़ता है अभी भी. हमारे कभी भी शक्तिशाली 30 साल से काम कर रही है, कभी दरवाजे पे हमारे लैश नहीं लगा, लॉक नहीं लगा. अब हम अंदर से दरवाज़ा लॉक करके रखते हैं ताकि कोई पहले आए तो डोरबेल बजाए, फिर हम दरवाज़ा खोले कि कौन है, अपॉइंटमेंट है तो आ सकते हैं आप. सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, अब हो रहा है. तो जब हम काम करते हैं ऐसी संस्था में और ऐसे सिचुएशंस में, तो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी को भी बहुत रिस्क हो सकता है. साथ साथ उसके साथ जो अगर ऐसी घटनाएं होती है, जो हर दिन धमकियां मिल रही हैं और हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो हमारे मानसिक तनाव पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. Let you know that I am working with the prisoners in the prison, and you can understand, imagine the stress level of their legal battles, their personal conflicts, and all other things returning back to home. Because most of us do not have the freedom to articulate stress, and that brings me to my own personal journey. Because I grew up in a fascinatingly liberated environment, a democratic environment, and then when I got married off, it was a completely different environment. And so you are sort of growing up with certain kind of values. You are growing up with certain kind of mindset, and when you are then going to another space, another location, another time, there's a certain other kind of expectation which then doesn't match with what you have been brought up with. And there is so much of conflict with that, and you don't know how to negotiate that. So my first kind of, feeling was too much of stress, and I didn't have the freedom, I didn't know how to articulate that. And finally, it sort of burst like a pressure cooker, and I was literally in pieces and on the floor. It's not very easy for us to connect to the community that easily. So we tried video call, we tried normal cellular phone calls, though forget about the internet. The cellular network itself is also not available in some places. So yeah, that is also definitely a challenge. In my community, it has been a very, very difficult time for especially my transgender friends whose main source of business was sex work, and also other people in the community who have been living alone because there is a lack of interaction, human touch, and obviously financial conditions are really alarming for everybody. That is, a lot of people have lost jobs, and it is just adding up to our usual anyways stress. Personally,
फीलिंग वेरी सैड। डिजेबिलिटी को पेंशन नहीं दिया, ट्रांसजेंडर को पेंशन नहीं दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस किया 1000 रुपीज़ देना पड़ेगा, वो नहीं दिया। तो डिजेबिलिटी पर्सन ज़्यादा रेशन का सफ़र हुआ है कि हर चीज़ बंद हो गया, स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई, तो फिर बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी? लड़कियों का आना जाना, लड़कियों की गतिशीलता, ये बंद हो गया। फिर लड़की औरत जो पहले पुरुष और उसके पति भाई या पिता घर के बाहर रहते थे, काम करते थे, तो थोड़ी सी लड़की महिलाओं को आज़ादी घर में मिल जाती थी, ये भी समाप्त हो गई। People do not have chance to speak. Stress, expression. I would also want to bring out here whether we have avenues where we can express our stress. तो पर्सनली एक लोग फ़ोन कर को हमको रेंट पूछ रहे हैं, एक लोग फ़ोन कर को रेशन पूछ रहे हैं, एक लोग फ़ोन कर को हमको गैस चाहिए, रेंट चाहिए, घर में कुछ भी नहीं है, ऐसा हेल्प पूछ रहे हैं। क्रिटिकल सिचुएशन, हमारा पास पैसा नहीं है, एक हम हेल्पलाइन नंबर छोड़िया, वो हेल्पलाइन नंबर के साथ अभी हम काम करके गए। Tomorrow, I mean, I'm holding a mic right now, or tomorrow I might be sitting in a panel and I'll be talking. But, I mean, I'm genuinely curious and at the same time anxious that am I being even listened to? Are people even willing to sort of at least try to understand? कहीं भी जाएं, किसी भी कार्यक्रम या कहीं भी, तो तनाव के लिए कहीं कोई चर्चा की बात नहीं होती है। ये भी है कि बाकी चीज़ के लिए होता है, लेकिन सीधे कह दिया जाता है हंसना चाहिए, बोलना चाहिए, खूब हंसो, खुल के हंसो, दिल खोल के हंसो, ये कहना आसान होता है। लेकिन कैसे हम ये अपनी देखभाल कर सकते हैं, ये शब्द का भाव अगर होता भी है तो केवल पुरुषों के लिए होता है कि भाई योगासन करने उनको जाना है, प्राणायाम उनको करना है और ये सब उनको करना है, उनके लिए हुआ करता है। लेकिन महिलाओं के लिए तो है भी नहीं। वो तो अगर जाती भी हैं धार्मिक रीत में तो उनको क्या करना है, चुपचाप बैठना, कभी इच्छा हुई तो थोड़ा ताली बजा लो, लेकिन झूम भी नहीं सकती।